रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार फिर से देश की आम जनता को राहत मिली है क्योंकि रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। जी हाँ, रेपो रेट को नहीं बढ़ाया गया, यानी आपकी और हमारी ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बढ़ोतरी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। हालांकि रेपो रेट को स्टेटस को रखने के साथ ही साथ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्टांस को भी न्यूट्रल रखा है। आपको बताते चलें कि जो रेपो रेट है वो 5.25% था और उसी पर बरकरार है, यानी ईएमआई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेगा और इसके साथ ही स्टांस न्यूट्रल है। और साथ ही साथ एक और राहत की खबर, इन्फ्लेशन नंबर्स अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर उनके टारगेट लेवल से नीचे हैं। इन्फ्लेशन नंबर्स जो आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है वो है 3.48% पे, जो टारगेट लेवल है वो है 4% का। यानी कि इन्फ्लेशन के स्तर पर अगर देखें, इन्फ्लेशन के मोर्चे पर भी अगर देखें तो कोई भी बहुत बड़ा बदलाव या फिर टेंशन लेने की बात अभी नहीं है आरबीआई गवर्नर के हिसाब से चले तो। हालांकि ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है, जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है, उसको कम कर दिया गया है, 6.6% कर दिया गया है। और आरबीआई गवर्नर का कहना है कि सप्लाई शॉक की वजह से और मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से यहां पर ये जीडीपी ग्रोथ रेट पर नेगेटिव या फिर ये कहें कि एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। यहां पर थोड़ी सी चिंता की बात है इकोनॉमिक लेवल पर अगर देखा जाए। एक एक करके हम आपको सारे पॉइंटर्स बता देते हैं कि क्या कुछ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में सामने आया है। सबसे पहले तो रेपो रेट को 5.25% पे बरकरार रखा गया। सीधी सी बात है, ईएमआई ना आपकी घटने वाली है ना बढ़ने वाली है। एक तरीके से इस क्राइसिस सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आम आदमी के लिए राहत की खबर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सप्लाई शॉक के ऊपर आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान आया है, एनर्जी प्राइसेस के ऊपर बड़ा बयान आया है। संजय मल्होत्रा के अकॉर्डिंग जो सप्लाई शॉक इस समय मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण बना हुआ है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके कारण इस समय इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है और जीडीपी ग्रोथ रेट कम करना पड़ा है। यानी जो प्रोजेक्शन है जीडीपी का वो 6.6% कर दिया गया है। अगला पॉइंट है रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के। यहाँ पर भी देशवासियों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि 3.48% का जो प्रोजेक्शन है वो 4% के लेवल के नीचे है और यही वजह है जिसकी वजह से अभी फिलहाल रेपो रेट के ऊपर कोई भी असर पड़ता नहीं दिखाई दिया। एक बार सुन लीजिए कि गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कुछ कहा है। In this backdrop, the Monetary Policy Committee met on the 3rd, 4th and 5th of this month to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC, although firming up marginally from 3.2% in February, headline CPI inflation was below the target during both March and April this year. In fact, 3.4 and 3.5% respectively. While food inflation edged up, fuel inflation remained muted as retail prices of petrol and diesel were unchanged in March and April. Core inflation remained stable at 3.7% during March and April. Excluding precious metals, core inflation was much lower at about 2.1 to 2.2% during this same period. International crude oil prices, the Indian basket, have averaged around $110 per barrel during the last 2 months. And indications are that the average oil prices for this year would be substantially higher than what were assumed during the last policy. You may recall that in the last policy we had assumed crude oil prices to average for this year at $85 per barrel. Higher energy prices and an increase in several input prices also led to a sharp spike in WPI inflation in April. It was more than 8%. Turning to the inflation outlook, the partial pass-through of high global crude oil prices to domestic pump prices of petrol and diesel started in May.
prices of several inputs such as commercial LPG, industrial raw materials, chemicals, base metals, rubber, and plastic products, among others, have increased. These could exert upward pressure on CPI inflation in the coming months as firms pass on these higher input costs. Considering all these factors, CPI inflation for this year now is projected to be at 5.1%, about 50 basis points more than earlier projected, with Q1 at 4.2%, Q2 at 5.1%, Q3 at 5.9%, and Q4 at 5.4%. Core inflation is projected at 4.7% for this year.